Hello, everyone. So, before starting and before discussing, I would like to tell you or I would like to ask you, अगर मैंने एक word बोला that is daycare. अगर मैंने daycare बोला तो what is the first thing strike in your mind? Daycare. If you are a parent, आपको लगेगा guilt, right? अगर society है judgmental, isn't it? But trust me, 18 years in this industry, if your kid is in daycare, that is the best gift you are giving to your kid. So इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So why daycare is misunderstood? क्यों ऐसे होता है कि daycare बोला तो daycare में है आपका बच्चा, पेरेंट को लगता है कि दे फील गिल्टी बिकॉज उनका पूरा फोकस होता है उनके करियर पे, उनको टाइम देना होता है बच्चे को, बट बैलेंसिंग एवरीथिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. उनको ऐसे लगता है कि अरे मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ. ऊपर से सोसाइटी का तो प्रेशर होता ही है कि अरे बाप रे, आप दोनों भी वर्किंग हो एंड यू आर कीपिंग योर किड इन अ डे केयर. ये तो अलग ही प्रेशर हो जाता है. बट द रियलिटी, द ट्रुथ, ओके, अगर बच्चा घर पे है, इफ योर किड इज एट होम, ही इज अलोन, he craves for the company because कोई बात करने के लिए ही नहीं है, because mom and dad are busy and nowadays it's a nuclear family. कि ऐसे भी नहीं है कि joint family है, बहुत सारे जन हैं, no. So he or she crave for the company. बहुत बातें करनी होती है, and nowadays again lots of gadgets. मोबाइल है, टीवी है, वीडियो गेम्स है, तो continuously what happens? The kid is busy in mobile, और कैसे टाइम दे? So this is the actual truth. And when the kid is in daycare, he or she is having lots of bhaiya and didis. They have friends, there is laughter, there is learning. So अभी और डिस्कस करते हैं कि क्या, what are the benefits, what are the importance if your kid is in daycare. So very first point, that is the social and environmental growth. So क्या होता है? I will just explain you with an example. Okay, so a 2-year kid, okay, she came in our daycare, and so as the kid is at home, तो क्या होता है, अकेले है, जो भी चीज होती है वो उनकी ही होती है. तो 2 weeks that girl was taking her toy with her only. She was not sharing. अपना ही है, ये मेरा ही है. But the parents were so shocked seeing that after 2 weeks she was sharing everything with the other kids. So ये छोटे छोटे चीजें हैं, तो ये सिखाया नहीं गया. She observed it and she learned it. So the social and environmental जो growth होता है, ये बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है. Then another thing is learning and different languages. So language and communication skills. Again, I have an example कि one student he came from South India, तो घर पे भी हिंदी पता ही नहीं था, so English and their mother tongue they were knowing. तो बच्चा आया, पेरेंट वॉज वेरी कंफ्यूज्ड कि अरे कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, बेसिक चीजें भी कैसे पता चलेगी. बट आफ्टर 3 months the kid were able to form small sentences in Hindi, in Marathi and in English. So it was such a drastic change, और ये भी किसी को सिखाया नहीं गया था. See, the age of the kid, like 3, 2, 3, 4, 5, 6, this is a grasping age. अगर हम 30, 40, 50 में कोई लैंग्वेज सीखने गए तो हम सीख सकते हैं, बट हमें जितना टाइम लगता है उतना अगर स्मॉल किड है वो जल्दी से सीख लेता है. देन द थर्ड पॉइंट इज skills through different activities. As it's a day care, बच वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि वीडियो गेम खेले, टीवी देखे, मोबाइल है. ओके, टीवी इज एंड ऑल आर देयर, बट फॉर स्मॉल, मतलब 15 मिनट के लिए एंड ऑल. सो इससे क्या होता है, देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज, लाइक गेम्स होते हैं, जस्ट X and 0 का जो गेम होता है. ओके, सो द किड इज प्लेइंग, उसे पता चलता है, ओ देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस. अच्छा, मैं जीत गया, ओ मैं हार गया. बिकॉज व्हाट हैपेंस ना, घर पे न्यूक्लियर फैमिली है,
तो हम जानबूझ के बच्चों के लिए क्या करते हैं, उनको जिताते हैं। तो वो फीलिंग ही नहीं होती उनमें कि यस, उनको वो समझे कि अरे हारना भी जरूरी है। बट व्हेन यर दे आर इन डे केयर, तभी ये सारे चीजें अपने आप ही डेवलप होती जाती है। देन मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ भी सेल्फ डिफेंस, मेंटल हेल्थ, घर पे क्या होता है, अगर वो चल रहे हैं, कुछ भी चीजें कर रहे हैं, तो सम और दी अदर पर्सन इज देयर कि अरे उठा दिया। यहाँ पे दे लर्न खुद से उठना, खुद से सीखना। सो दीज आर द थिंग्स जिसमें अगेन आई विल टेल दैट ये सिखाया नहीं जाता, ये संस्कार जो उनमें अपने आप हो जाते हैं एंड दे लर्न इट। सो अगेन आई विल से that daycare is the best gift that any parent can give to their kid. It's a pressure by the society that अरे आपका बच्चा daycare में है. No, wow, your kid is in daycare. Yes, that's superb because he or she is learning so many activities, many things like confidence, stage fear, self-defense, languages, lot and lot of things. Now, one question comes is, अभी exactly how to choose a daycare? अगर हमारे बच्चों को हमें daycare में डालना है, so what are the things which we should see in that daycare? So very important is the ratio. कि ratio कितना है? See, if there is one teacher, then 6 or 4, that is fine, depend on the age group of the students. So ratio is very important. Friendly, how the teacher is behaving with the kid. Teacher बहुत kids friendly होने चाहिए. Very important, the safety, the hygiene, ये सारी चीजें बहुत ही important है. Then again question आता है कि yes, we are working, but हम तो working नहीं है, हम तो हमारे घर पे ही बच्चों को रखेंगे, हम क्यों डे केयर में रखें? I will suggest 18 years in this industry, अगर आप घर पे हो but still send your kid for daycare. Why? Because ये सारी चीजें वो सीखेगा, वो सारी चीजें जो घर पे कितना बात करते करते कितना बात करोगे, कितने लैंग्वेजेस में उसके साथ बात करोगे. इवन ही और शी नीड डिफरेंट पर्सनालिटीज, दे नीड डिफरेंट पीपल टू अंडरस्टैंड, दे नीड डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स. And again, very important for a mother, for a parent, क्या हो जाता है, when the kid comes, the whole world is the kid. वो खुद के ऊपर भी टाइम नहीं दे पाते हैं because they are so busy with different उनके schooling, their different classes, different activities because of that. But see, art is one thing which never ever keeps you alone. So whether art, it can be cooking, it can be, ऐसे बहुत सारे मदर्स होते हैं, दे लव कुकिंग, बट बच्चे के पीछे वो कुछ ऐसे अलग सा बना ही नहीं पाते from their daily routine. Why? Keep your kid in a daycare, give time to yourself as well, and even don't feel guilty about it. Ki, wow, you are sending, it's a win-win situation for your kid as well as for you. So these were the things which I would wanted to tell you all. Then the next thing, that is, daycare is not compromising. Again, I will tell, it is not compromising. It is the choice. You are sending your kid in a daycare. It's not a burden at all. It's a blessing. You are keeping your kid in a daycare. One thing I would like to tell you all, a very personal thing. Okay, so मुझे आपसे share करना है. When I was 4 months, I was in a daycare. I'm so grateful that my mom and dad chose that she should be kept in a daycare and we should work. And today I am 30. I'm running 4 businesses. One is Sile's Art Zone, where we are teaching different art activities. Second is our preschool, where we are learning and teaching different activities. It's a fun learning. Third, it's an anchoring, the stage fear, the confidence, which I have got in a daycare because I was independent. I was
free. I was able to talk different languages, everything in a daycare. Yes, I must have learned that in my home as well. But again, I will tell you, एक इंसान से कितना सीखेगा ना? They also see when they have to go to school, they have to go to college, they have to go to working. So many people are there they have to face. So I'm so lucky that today I can run 4 businesses is all because it's not because I'm saying this because I'm the director of a daycare. No, I have lived that journey. So once again, I would like to tell you all that daycare is not again judgmental, not a burden. It's the best and ever gift you can give to your kid. Thank you so much.